अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तो ये है तीसरा पार्ट एग्रीगेशन फंक्शंस का। जैसे कि मैंने पिछले वाले पार्ट में बताया था कि एग्रीगेशन फंक्शंस क्या होते हैं। एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं कि भाई जनरली काउंट, सम, एवरेजेस, मिनिमम, मैक्सिमम वगैरह वगैरह। तो अगर हम इफ़ वी हैव अ क्विक लुक इफ़ वी वांट टू हैव अ क्विक लुक के हाउ मैनी transactions were in total. So we have to count the number of all rows or the number of transaction IDs for that matter, right? uh, that can be done very simply. इधर हम जो है वो अच्छा यहाँ तो सम कर रहे हैं। तो इधर अगर हमें अलहदा अलहदा से देखना है क्विक फंक्शन को यूज़ ना करके, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लिख लेते हैं काउंट, एंड देन वी स्पेसिफाई द रेंज फॉर इट। लेट्स से दिस वन, और हम एंटर करते हैं तो वी गेट दिस 18,834। सिमिलरली what we do here is SQLDF. This is something that you won't have to write in the actual database thing where you will be running your SQL queries. So as I said in the previous one, we have to give the command select, and we'll do the pretty much same thing here. We'll say count, and we'll mention the column name, that is transaction ID, and from the location here. Sahi. So in the first thing we'll get this number of rows or the number of transactions, and in the second part यार इसको अलग कर लेते हैं, क्या ख्याल है आप लोगों का? तो अलग कर लेते हैं, यहाँ दिखा देते हैं। अच्छा, तो अब if we want to do a some we have if you want to do something similar here, कि अब हम अगर यहाँ पर आए और हमें ये देखना है यार कि लेट्स से लेट्स फॉलो द प्रीवियस एग्जांपल, कि हमें ब्रांड वाइज देखना है कि किसकी कितनी ट्रांजैक्शंस हुई, किसकी कितनी सेल्स हुई। तो हाउ डू वी डू दैट इन इन एक्सेल? कि भाई एक आसान तरीका तो ये है कि हम यहाँ से इसको कॉपी करें, और ये देखें ये कॉपी होने में ये जनरली हैंग हो जाता है। तो और यहाँ पे अगर ये पेस्ट हो जाए तो अच्छी बात है, जो कि उसमें भी ये निस्बतन लग रहा है कि टाइम ले। खैर, अब ये पेस्ट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, वी हैव टू डू समथिंग। व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू रिमूव द डुप्लीकेट्स। यस, प्लीज रिमूव द डुप्लीकेट्स। वी हैव 6 ब्रांड नेम्स इंडिविजुअल, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू यूज द काउंट एफ फंक्शन, कि भाई काउंट करो, क्या है, काउंट करो ओके, count if this and if the criteria is this brand, तो we get, फिर हम इसको सम करके, हाँ एग्जैक्टली, so this number matches with this, right? तो we now know कि कितने कितने ब्रांड्स की कितनी सेल्स हुई है, कितने ऑर्डर्स हुए। Now what you need to do the next part in this Excel, this is editable, सही। सो व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज कि यहाँ पे आप लोग काउंट कीजिएगा कि दिस इज द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। नाउ यू गाइस गिव मी नंबर ऑफ यूजर्स हियर। ठीक हो गया। और एक चीज और कर लेते हैं, नंबर ऑफ यूनिक ट्रांजैक्शंस। सही। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हो सकता है कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर वी हैव लेट्स से more than one sales. It's obviously possible that someone can buy 2 cycles from this particular brand, or this particular brand, or this particular brand. So the number of users might be less than this number, obviously, and this might also be different from this in some cases.
So I want you guys to calculate them here, while I'll show how to calculate it here. सही. तो as we said earlier कि we select something. यहाँ पे हम brand select कर रहे हैं, तो we say select brand, then count transaction ID as we did transactions. सही. Okay, we this is something called alias, that you are calculating something, और उस काउंट का जैसे मैंने यहाँ पे नाम स्पेसिफाई किया है, सो वी आर जस्ट स्पेसिफाइंग द नेम हियर एज वेल. तो वी हैव मेंशनड काउंट अगेन. नाउ व्हाट डू वी हैव टू काउंट? डिस्टिंक्ट. व्हाट्स द नेम हियर? चलो यहीं पे देख लेते हैं हम. कस्टमर आईडी. So we have to count the unique number of customers. So customer ID is the customers, uh, as customers. Well, it's not necessary that you write as to mention. You can simply write the name. So we count again, and we count the number of unique transactions. So we use this function distinct, that is a synonym of unique. So again, transaction ID unique. Oh, one more thing, you have to use underscore sign for if you want to write more than one word to a specific column name, unique orders. And what more we have to do? We have to group by the categorical variable. So all the aggregation would be done without being grouped by. And a thumb rule here for grouping by is either you specify the position for that particular category, or that definite uh, variable, non-numeric variable, or you write the name of it. So I can write brand here as well, and I can also write one here as well. Let's run the query. It's about 7 minutes. I planned 5 minutes for this. So here we can see is the transaction are all unique. So but as we said, there are different from the number of customers here. I think if this is true, then this should also be different, if I'm not wrong, for that matter. बल्कि नहीं, हाँ सही, that makes sense, it makes sense. ठीक. And yeah, just to show this thing again, group by one and run it. So I hope it's clear so far. अगर कोई confusion हो तो you can either uh, get your queries on YouTube where this is uploaded, or you can reach to me on LinkedIn. Sahi. Let's move to window functions. I would mention my friend to write the definition for window function, or we can also explore it together, because just let's do it together. What is the function of a window function? A window function performs an aggregate like operation on a set of query rows. However, an aggregation group blah blah blah. You should read it on your own, because when I'll show a quick demo of it, you will most likely understand it. So let's quickly jump on to the next video, and let's get the job done for window functions.